मैं हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में is that fine? Huh? Okay. You've already spoken a lot about what is happening on campus. Um, you know what I would like to, and can I sit down? Yeah. No, no, I don't want to sit on the chair. I've never sat on a chair there also in class. And the thing is that what I would like to, draw your attention to is what we can do. Okay, our friend here told you that in several hostel campuses, there are workers who have not received salaries, and this is something which we've also found out. It's happened with the computer operators in school offices, etc. So, what is it, and under what context can we do something about it? Okay, I would feel that that is what we need to focus upon in today's meeting. What surprises me, I came to JNU in 1992, years ago, and from then to now, it's always something which has, struck me that as a university, why is it that we have to struggle so much? यूनिवर्सिटी होते हुए भी एक जगह जहाँ सब एजुकेटेड लोग पढ़ने आते हैं, इसके बावजूद क्यों हमें बुनियादी चीज़ों पे लड़ना पड़ रहा है? And the workers' issues have been central, whether it was in the 90s, whether it is today. This is the irony. That कोई रूरल बैकग्राउंड में ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा, ये एक्सप्लॉयटेशन खुलेआम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंपस में हो रहा है. ये हमें समझनी चाहिए, विच शोज दैट कि क्या किस तरह का एक फ्यूडल आउटलुक है, किस तरह का जब लेबर जॉब करने आती है. And it asked, and like he said, workers in law, it is a constitutional duty to provide certain things, an identity card, a salary slip, and these are the things that workers in JNU had not had. These are things which help you when you are chucked out of your job to put before as evidence that you've been workers. That's why they also become very, very important. Now, the problem is that in a place like a university, where there are people writing about it, you have a whole labor studies division, you have students working on labor, you have, a whole community out there, but how normalized this exploitation is what is always baffling. Normalization इधर तक कि आप it's very common, कूड़ा भीनते हुए देखते हैं आप, हाँ, और भीनना मतलब हर लॉ बुक में लिखा है कि सेफ्टी इक्विपमेंट देना चाहिए. कोविड के टाइम में भी यहाँ जब लोग आ रहे थे, जो गार्बेज कलेक्ट करने आ रहे थे, उनके पास ग्लव्स थे, हाँ, ना उनके, और नॉर्मल टाइम में भी ये चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जाती. ओके, सो नॉट ओनली इज इट हैपनिंग इन अ यूनिवर्सिटी, बट इट्स हैपनिंग इन अ कम्युनिटी वेयर दिस शुडंट हैपन. दैट इज द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू रियली दिस नॉर्मलाइजेशन कि ठीक है कोई हाथ से कूड़ा भीन रहा है, ये चलता है, नहीं. This is something which we can't. It was, I remember they used to, I don't know now कि हॉस्टल बाथरूम्स में एसिड अभी भी यूज़ होता है कि नहीं, तेज़ाब यूज़ होता है कि हाँ, स्टिल बीइंग यूज्ड. सो अगर आपने
पढ़ा होगा तो तेज़ाब के ऊपर भी हम ये बोलते थे कि एक तो तेज़ाब नहीं होना चाहिए, और जो वर्कर वो यूज़ कर रहा है उसका हेल्थ के ऊपर, सो दिस देयर इज दिस होल थिंग ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एक्सेट्रा विच आर इम्पॉर्टेंट. These are issues. So when you look at wages, okay, now I'd like to actually, what I expect from the student community as well as from the teachers community as well as from the residential community which stays in JNU, is to be, you know, to not normalize this sort of exploitation. Not, you know, if somebody in our campus, there are people who have not been paid 3 months of salary. We as teachers, we had a delay this time of 2 days, and mind you, there were so many teachers who rang up saying that why the delay. So if the teachers' salaries are getting delayed, there is, look at the workers who have not been getting their salaries for 3 months. Okay, so that's the issue. Now somebody is doing their work, right? Somebody is laboring, somebody is in, and the money is not being processed. But more than that, it is the whole infrastructure which surrounds this sort of illegal behavior that I want you to think about. जब आप सैलरी नहीं देते किसी को, उसको तो अपना घर चलाना है, राइट? तो वो क्या करता है? इसी यूनिवर्सिटी में बहुत लोग हैं जो पैसा आपको देते हैं, ठीक है, उधार. और एक टाइम तो ऐसा था JNU में कि 2 रजिस्टर्स होते थे ठेकेदार के पास, शायद अभी भी होते हो, और यही 2 रजिस्टर्स होते थे, एक में सैलरी वितरण हो रही है और एक में एडवांस, जो पिछले महीने लिया था एडवांस वर्कर ने, एक हाथ से सैलरी ले रहे हैं और दूसरे हाथ से वो सैलरी वापस दे रहे हैं, क्योंकि एडवांस चल रहा था. इस बार भी अगर आप पूछेंगे वर्कर्स से कि उन्होंने ये 3 महीने गुजारे कैसे, हाँ, किससे पैसे लिए, किन हालातों में, कितने सूद पे लिए, तो आप देखेंगे कि अभी तक उनकी पूरी सैलरी वापस नहीं हुई. मित्र, पूरी सैलरी नहीं हुई है. 1.5 मंथ्स की सैलरी दी गई है. जो गार्बेज कलेक्शन पे बैठे थे उनको सिर्फ 1.5 मंथ्स की सैलरी दी हुई है, और जिससे पूछने पे पता चला कि क्या किया था उन्होंने, जो उन्होंने लोन लिया था लोकल आदमी से, वो पैसा जैसे आया उसी तरह अगले दिन चला गया, क्योंकि वो लोन पे, ठीक है ना. ये छोटी छोटी चीज़ें जो डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस में आती है. हमारे JNU में पहले भी स्टूडेंट कम्युनिटी, टीचर्स कम्युनिटी बहुत बार लेबर पे काम की है, एंड आई जस्ट वांट टू टेक यू थ्रू वेरी स्मॉल incidents of how we managed to get things going. Okay, एक टाइम ऐसा था 2006, जब वेतन 60 रुपये था, मिलता था 60 रुपये. 2006 ज़्यादा दिन नहीं, ज़्यादा साल पहले नहीं लगता, हाँ, पर 60 रुपये, जबकि वेतन उस टाइम 120-130 का था. करते 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 अभी जो वेतन है, हाँ, आज ये स्थिति आई है, एंड कुछ अच्छा भी लगता है कि ये स्थिति आई है कि जो वेतन है वही वेतन मिलना चाहिए. ये अवेयरनेस वर्कर तक पहुंचाना, ये अवेयरनेस कि आप एक वर्कर होते, आपको जो क्या कट रहा है वो सैलरी स्लिप, जो कि अब बहुत 1 साल से सैलरी स्लिप भी नहीं मिल रही, बट समझाना कि वर्कर को कि ये क्या कट रहा है, इसका क्या फ़ायदा है, कैसे आप खुद देख सकते हैं, अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं, कैसे आप मॉनिटर करेंगे कि आपका ओवर टाइम ठीक आ रहा है कि नहीं. ये सारा काम स्टूडेंट्स ने किया था. पता है, मुझे बहुत ही गर्व होता है, कई स्टूडेंट्स उसमें से
जाके बाद में मजदूरों के बीच में ही काम करने लगे। पर एक टाइम ऐसा था जब स्टूडेंट्स अपने अपने हॉस्टल में आंखें खोल के कान खोल के पता करते थे, एंड दे वुड मेक लिस्ट्स, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू नाउ. You know, you need to make lists of workers. See, when you talk to the administration and you say कि there are no, the salaries have not been provided, okay, administration will tell you no ये सब तो झूठ है, कोई वो नहीं है, ये no, you have to talk proof. So you need you know, it's not just a lecture that one comes to. You need to go back. Take any worker who's working in your mess, just ask these basic questions. Where have you got your salaries? Have you, you know, can you show us your salary slip? Make teams around you. Okay, there are people who you will find, whether it's in your school office, whether it's in the library, whether it's in the hostels, Safai Karamchari, there are so many. Okay, and so that is one. The information, because right now that is where we are lacking. Every day I'm getting calls that ये नहीं salary नहीं मिली, और सबका ये है कि 3 महीने से नहीं मिल रही, कोई बोल रहा है 4 महीने से नहीं मिल रही, but it is not good enough. Okay, so you need to ask and find out. And this, if you are thinking of doing this work, I mean, the whole point of a talk is that you need to take it up as an agenda. You need to actually do something about it. So the first things are that you start collecting information. Okay, and you start collecting information, and you start collecting who are their contractors. Okay, so the companies. Okay, now आप सब ने पश्चिमाबाद देखा ही होगा, राइट? वो बिल्डिंग्स, जब जेएनयू के हिस्ट्री में ये भी था, हमारे यहाँ बहुत फैकल्टी है, बहुत स्टूडेंट्स है, बट वो जब क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट है वो पूरा इनफॉर्मल लेबर पे ही रहा है, तो मुझे बहुत अजीब लगता था जब ये बड़ी बड़ी एकेडमिक बिल्डिंग्स बन रही थी और उसमें बच्चे भागते थे, लेबर के बच्चे भाग रहे हैं, कोई हेलमेट नहीं पहन रहा, कोई महिलाएं भी वहीं रह रही हैं, ये सारा चीज़ जैसे आम हो गया था. एंड आई रिमेंबर उस टाइम अगेन थ्रू द स्टूडेंट्स वी हैड डन अ वंडरफुल सर्वे. यू नो, हम लोग अपने एकेडमिक लाइफ्स में रिसर्च मेथडोलॉजी बोल के कोर्स करते हैं. So what we had done was we had asked students who wants to join for this unique research methodology kind of course, where we are going to ask our labor. You don't have to go out of the campus, but you can do everything of that course sitting here. So, you know, go and interview. So people would have these intensive interviews with the workers, with the women, to get even in and chalk out these things on migration. Where did they come from to the city? Okay, what is their experience? What is there? So there was this very rich qualitative data. But what is interesting, उस exercise में हमें पता चला कि यूनिवर्सिटी के में रहते हुए भी हमने देखा कि जो महिलाएं थी उनका नाम रजिस्टर पे नहीं था. पेमेंट जो रजिस्टर था, सोचिए ये बहुत दूर की बात नहीं है, हाँ, पर मतलब इसी यूनिवर्सिटी में उनका नाम रजिस्टर में नहीं होना एक बहुत बड़ा क्रिमिनल एक्ट है. ओके, एंड समथिंग विच यू आर dispensing salaries, you are taking labor, but you are not including women. And this came up in the High Court. I had filed the case, so it came up there. And the important thing was that every time, and the High Court had said there should be scrutiny, etc. So जब भी कोई इंक्वायरी टीम आती थी तो पश्चिमाबाद के सबसे ऊंचे तले में सारे महिलाओं को भगा देते थे. You know, but you can't
So we have intensive records of how पेज आफ्टर पेज सिर्फ पुरुषों के नाम. अच्छा, उसके ऊपर अब इतने दिन आज़ादी तो हो गई है, तो कुछ ना कुछ साइन तो लोग को आता ही है, पर रजिस्ट्रार में सबका अंगूठा, हाँ, सबका अंगूठा. दिस इज समथिंग, दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स बट विच शुड स्ट्राइक यू, बिकॉज आज के ज़माने में पीपल कैन साइन something at least. Why is it this angutha? And that is what struck us, that this is not acceptable, something is wrong. And those registers, some of them were sent for forensic. I'm very proud of this part of the story, because forensic तो सबसे मर्डर और इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है. तो हमने वो registers under court order, we sent it to a forensic lab, government forensic lab. We got our report saying these thumb impressions are all of the same person. हाँ, अच्छा, और ये चीज़ हम अकेले नहीं किए, वो जो सब लोग साथ में थे, कौशिक तब शायद आया ही था, या अभी तब तक ऐसा में नहीं आया होगा, बट तब शायद, बट उतना उसके पहले वाला दौर. बट द थिंग वाज दैट दिस इज व्हाट वी मैनेज टू डू. ओके, एंड आई बिलीव दैट दीज आर थिंग्स व्हिच आर पॉसिबल. It is after we got the forensic and the forgery. हमको बचपन से सिखाया जाता, फॉर्जरी इज क्रिमिनल, राइट. हाँ, ये तो आप एक तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ नहीं होने दे रहे, उसके ऊपर आप ये धांधली कर रहे हैं, फॉर्जरी कर रहे हैं, तो इस पे तो एक्शन लेना ही पड़ेगा. It became so embarrassing for the institution, which is our university, that time the Vice Chancellor, all the salaries were brought to line. All the salaries, and I think this is a very big achievement. If you look at some of the old exercises done by students were taught how to read salary slips. They were taught how to, जैसे sanitation workers होगा, कोई भी worker इधर है, उनका सबका PF कटता है, हाँ. तो students were taught how to check PF accounts for workers, and then train the workers how to look up the PF. I don't know, कौशिक याद है PF camps लगे थे? So there were used to be PF camps. And they were run by students. And the students managed to find that. And then this became interesting, because everybody was glued into it. Understand the dilemma. आपको सैलरी सपोज 10,000 है, सपोज. यहाँ एक कंपनी आई, सिक्योरिटी कंपनी आई, हाँ, जो कि आपको हम, मतलब अब ये वाली कंपनी तो छोड़ो, इसके पहले एक और कंपनी आई थी G4S, और उसके पहले एक और कंपनी थी SIS, और उसके पहले फिर G4S था. तो एक जगह सिक्योरिटी के लिए आपको कितने बंदे चाहिए, कितना आवर्स होता है दिन में, हाँ, 24. तो कितने देर की ड्यूटी होती है, 8. तो कितने लोग चाहिए, 3 चाहिए. ओके, हमारे great university, and here I am being very sarcastic because I don't expect this from a university, and that too a national university like ours. Okay, so instead of 3 people doing 8-hour duties, G4S, SIS, and they all learn from each other. Okay, they all learn from each other. So what they would do is they would employ 2 guards who would each do 12 hours of duty. It's important to repeat these histories to understand where we've reached now. Okay, so
two guards doing 12-hour duty, आपका cover हो जा रहा है. Now law says that after 8 hours you have to give overtime, and that has to be double. So when you hear about surplus labor, अपने अपने जो भी कोर्सेज पढ़ते हो, सरप्लस लेबर तो है ही प्रॉब्लम हमारे देश में. उसके ऊपर ये प्रॉब्लम है कि सरप्लस लेबर का एक्सप्लॉयटेशन, तो ओवरटाइम कहाँ देते हैं. तो ये लोग जो काम कर रहे थे उनको सिर्फ 8 घंटे का ड्यूटी का पैसा मिलता था. दे वुड नेवर गेट दी ओवर टाइम. बट जो बिल्स दिए जा रहे थे ऑफिस में, उसमें एक फर्जी थर्ड वर्कर ऐड हो रहा था. Okay, so there were 2 real workers and 1 farzi worker, and this is not my imagination. I can show you the reports and the thing. Okay, this was continuing for over 10 years under G4S in JNU. Again, and so when a person is paid 10,000, okay, there is, we taught our students learn how to read a salary slip. It's very important. मतलब अगर एक्टिविस्ट होना है तो एक्टिविस्ट के साथ तुम्हें ये बारीकियों को भी थोड़ा देखना पड़ेगा. सैलरी स्लिप जैसे ही देखते थे तो पता चल जाता ये तो क्या दे रहा है. उसमें हाउस रेंट अलाउंस बेसिक से भी ज्यादा था. कोई बता पाएगा क्यों? मतलब जो अलाउंसेस है एक ऑर्डिनरी वर्कर को, वो बेसिक से भी ज्यादा. क्यों? क्योंकि आपका पीएफ जो है वो बेसिक पे कटता है. तो आप बेसिक को छोटा कर दीजिए तो आपका पीएफ भी छोटा हो जाएगा. ठीक है. हाँ, तो क्या हो रहा था कि वर्कर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन था वो इस हद तक जा रहा था, क्योंकि पीएफ तो ऐसा है कि आप वर्कर भी देता है, कंट्रीब्यूट करता है, कंपनी भी देती है. अब कंपनी कब देगी वहाँ पीएफ अकाउंट में वो नहीं मालूम था वर्कर्स को. प्लस दे वर नॉट, इट वाज नॉट अ वेरी suitable chunk which was going as PF. And that's when another momentous case was filed. Okay, and this again, anybody who's working on labor can have a look at the order that was passed. 120 crores, G4S was fined 120 crores for evasion of Provident Fund. जिसमें से 60 crores, this was an all India figure, okay, 60 crores for fined for PF diversion in JNU alone. Okay, वर्कर कहाँ जाके, क्योंकि आप नाम देखेंगे, आप एड्रेस देखेंगे. कभी आपने मास्टर रोल्स देखे हैं? वर्कर्स का जब भी आप काम करते हैं ना, पहला चीज आप देखिए मास्टर रोल्स या जो भी इंफॉर्मेशन उनका लिखा होगा, नाम, फिर लिखा होगा जिला अलवर. अब जिला अलवर में आप कैसे वर्कर खोजेंगे? इस तरह से आप नाम लिखवाएंगे तो वर्कर कहाँ, जब उसको कुछ ड्यू भी देना होगा ना तो वर्कर नहीं मिलेगा. एंड दिस हैज बीन अ प्रॉब्लम. Because even if we got the money for the workers, we were never able to identify who all worked in the university during that time. And that's a very problematic part. Okay? So today, one feels good that at least in the middle there were salary slips, but I'm being told, and this is based on what I have seen myself, workers could not provide a salary slip in this last 1 year. They have not been provided a salary slip, and this is something which is constitutional. Remember, when you talk about workers, you're talking about a larger issue.
You're talking about everything that the country is talking about. How you treat your people. If you want to know what is the nature of the state, then how you treat your workers is a very good reflection of what kind of a state you have. Is it feudal? What is your attitude? Can workers go and complain? Of course not. Surplus labor at full thing, and on top of that there are other exigencies which make it very, very problematic for workers to actually complain about non-payment or any sort of irregularities. Okay? Now, all of you are in the university campus, so you've heard about the labor codes. Huh? Labor codes ka suna hi hoga? Huh? We had as the government says, there were too many labor laws. Let me give you one small example. हमारे दिल्ली में जो वर्कर आता है उसका एक पूरा माइग्रेटरी सर्कल हमारे सामने है. ओके, और एक एक्ट हुआ करता था, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमेंस एक्ट, जिसके तहत आपको लाइसेंस लेना पड़ता था अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हो जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट वर्कर लेके आते. उसमें आपको, and this became quite interesting during the COVID, that if that act had been actually implemented, then the movement, the housing, everything was as the contractor's responsibility, which we saw during the lockdown. Workers were left on the lurch. You know, they had to find their own way. Now, this act was brought in 1979, but of course it was never implemented. It was never implemented. So if you look at the number of licenses which were issued under this, they're pathetic. You know, numbers are this tiny. But you know that all over India, people are migrating, people are joining so many jobs, etc., etc. So even in institutional spaces like ours, that's what I want to keep emphasizing, where constitutionally everything should be in order, we never asked our contractors, where is your license? Where is your license? Where are the thing? What is your undertaking? What is your responsibility? As a result of which, when there are accidents, the contractors just, you know, turn around and say, ये तो हमारा worker नहीं था, ये तो अभी 2 दिन पहले join किया है. You know, so it all adds up together. So when the codes were introduced to make India more business friendly, ease of doing. सारे जो restraints, like economists say ना, what is it? The restraints and the constraints को हटा के ease कर दो. अब वो आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या लाइसेंस लेना कंस्ट्रेंट है? पर वो लाइसेंस से जो मतलब these are debates which we need to do. आप कौन से तरफ से उसको देख रहे हैं? What about the welfare provisions? Right? तो when the government has brought in these labor codes, what they've done is they've sought to bunch it into groups. One of the ways in which it will really, really affect contract labor on campus is, look and do your survey. The companies, how many workers do they each employ? Do a survey. What are the contracting firms on campus? Bedi and Bedi kitne workers ko employ karti hai? Because the numbers have increased. So if you have above a certain threshold, and it's like, you know, I always say in my class, it's like that elastic game which we used to play as kids. I don't know if you all ever played. You take an elastic and you keep making it higher and higher. Okay, so the threshold is increasing. So naturally, जहाँ लेबर लॉ लगने वाला है, अगर वो नंबर्स ही आप इंक्रीज कर दो तो जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं उनको तो आप उसमें गिनती में ही नहीं लाएंगे, उन पे लेबर लॉ लगेगा ही नहीं. So contractors can always get away by saying, oh, now we are legally not bound to adhere to these labor laws, right?
So for me, that is the crisis. That is the crisis, that legally you are creating a structure whereby it's going to become easy for companies not to carry out their obligations, constitutional obligations regarding welfare, regarding employment for workers. पहली स्थिति खराब थी, अब आप लीगली उनको छूट दे रहे हैं. ओके, ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है, क्योंकि आप जब मतलब मैं कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर जो पूरा जो एक्ट है, जहाँ पहले एक आशा हुआ करती थी, जो वो आशा बहुत अजीब, पहले भी वो उसको वाटर डाउन किया था, बिकॉज एज यू नो मोस्ट even in the public sector units there was contractual labor which was being employed, and then with liberalization contractualization became the norm, and as you can see in all sorts of jobs contractualization has become the norm. Okay, so I'm not even talking about that possibility that there can be some regularization. Right now the danger is that you are here today, you can be dismissed tomorrow. That is the danger. And that's why I feel it's very important for a university community, because in JNU we used to have a very a norm whereby you find workers, the contractors would change, but the workers would continue. Okay, that will change, because they don't want to take on this obligation, which means that a person has worked 15 years and suddenly a new contractor comes, that person may not have his job anymore, but he's 15 years, he's been in a profession, how is he going to go and get another job? So the certain sensitivities that had been put in as a norm within the university structure, those sensitivities are disappearing fast. Okay, and that again is going to have its own repercussions. Okay, it's pitting one worker against the other, but it's leaving the company, giving it a free hand to do whatever they want. So if you are thinking of doing anything on labor, please first start. I mean, it's something which I would love to again engage with the students, because you